आपको बताएं कि इजराइल की गजा के खिलाफ जारियत और बर्बरियत को 11 महीने हो चुके हैं। कैन यू इमेजिन 40,000 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 91 फ़लस्तीनी कत्ल किए गए हैं। 24 घंटे की हमसे बात कर रहे हैं। गजा तबाह बर्बाद हो गया है, इमारतें खंडर बन चुकी हैं। इसके बावजूद इजराइल का वहशीपन ख़त्म होने को नहीं आ रहा। गजा पर हमले नहीं रुक रहे। मसाजिद, अस्पताल, स्कूल, कैंप, मतलब आप यू नेम इट, हर जगह इजराइल की दरंदगी से कोई भी जगह एक्चुअली महफूज नहीं है। और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इजराइल की मुसलसल बमबारी से अब फील्ड अस्पताल भी नाकारा हो गए हैं। कोई चीज़ वहाँ रहने नहीं दे रहे कि कहीं लोगों का कुछ थोड़ा सा भला ना हो जाए। साफ नज़र आ रहा है कि इजराइल हर सूरत फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर तुला हुआ है। दुनिया और कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम अस्पतालों को निशाना बनाने वालों की रविश तो रोक ले, तब्दील करवा ले, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा है। टोरंटो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आई सर्जन हैं, माहिर अमराज चश्म हैं, डॉक्टर यासर खान, जो कि गजा 2 मरतबा जा चुके हैं और वहाँ इमदादी सरगर्मियों में भी हिस्सा ले चुके हैं। एक मरतबा मार्च में अभी गजा में मौजूद थे और दिसंबर में लास्ट ईयर। डॉक्टर यासर, शुक्रिया आपने वक्त दिया। जाहिर है एक तो जेनोसाइड है जो पूरी दुनिया देख रही है, मतलब इन दिस डे एंड एज जहाँ सोशल मीडिया है, पूरी दुनिया देख रही है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है। लोगों को जान से तो मारा जा ही रहा है, जिसमें हज़ारों बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ सामने आई है, वो है पैलेट गन्स का इस्तेमाल, जिसकी वजह से लोगों की बीनाई जा रही है, बच्चों की बीनाई जा रही है। इस किस्म की एक चीज़ हमने पहले कश्मीर में भी देखी है, लेकिन अब मतलब ये हो रहा है, दिस इज़ हैपनिंग, और दुनिया की नज़रें हैं, दुनिया की नज़रों के सामने हो रहा है। हम आपका आंखों देखा हाल सुनना चाहते हैं। Assalamu alaikum. No, thank you so much for having me over. Yeah, you know, everything you say is it's horrible, and it's going on even to this day. You know, just 2 days ago, people were praying Fajr, and they bombed the 10th school in 9 days. The Israeli missile strike. They basically took a 2,000-pound bomb, and there's people that are praying Fajr. Children and men and even women who were housing in a school, and they bombed with 3 bombs, 2,000 pound, and they killed over 100 people. You could not even find bodies. It was all parts of bodies, and this has been going on for 11 months. I mean, when I went there, they had basically destroyed almost every hospital, and I mean, in 20 years of working, I've been to 40 different countries, and I've seen a lot, but this is the worst that I have ever witnessed. And yes, I mean, the world's best snipers, which the Israeli occupation forces are, you know, they have intentionally aimed and shot at children and young adults, young men, especially in the head, in the kneecap, 2 shots to the head. Sometimes they'll aim purposely for the knee or the leg because they want to disable the people. And the number of amputations that I saw, both of the eyes and the legs and arms, I've never seen in my entire life. I mean, in one day I saw 15 amputations, mostly children from age 2 to age 16. I myself, I amputated about 10 or 12 eyes. I actually took the eyes out because they were damaged with either gunshot, shrapnel, so there was steel, rock, and everybody that I personally treated was from age 2 to age 16. So they're all children. That I saw. अभी तो हम जिस्मानी ज़ख्मों की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और इसी से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब जो फैमिलीज़, जो बच्चे, जो लोग इससे गुजर रहे हैं, उनके ज़हनी ट्रॉमा को तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं। तो अभी शायद अटेंशन भी नहीं दी जा मगर सकती। हम यहाँ सुन के डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई इंसान जिससे उसका कोई जिस्म का उज़्व अलग हो जाए, काट दिया जाए या आँख चली जाए, उस पर तो शायद किसी की तवज्जो नहीं है, या वो तो अभी बात है ही नहीं, जो वो बात तो हो ही नहीं रही शायद अभी। नहीं, no, they have had the highest number of child amputations in history of modern warfare. And the thing is, there's over 20,000 orphans, and the thing with these orphans is that because the bombs have been so severe, they've lost not just one father, they've lost their parents, but their uncles and their aunts and their grandfathers and grandmothers, and
brothers and sisters, so they have nobody, and they're left with nobody. Plus, they have an amputation, so it's. I mean, they've lost their entire civilization. 1.9 million out of 2 million people are completely displaced. They've moved about 5 to 10 times from one place to the other. Israel says this is a safe zone. They go there. Israel starts bombing people in tents, right? And there's no purpose. There's no reason. It's simply ethnic cleansing. There's no logic to what. There's simply, it's like a killing machine, and the world is watching it. And you know, I mean, when you go there, you actually see it. You see all these. You see the bombs go, and about 15 minutes later, it's mass panic, and people come. I mean, I remember there's one woman holding her 8-year-old son. Who was skinny because they're all starving. Israel has blocked even food and water from getting in. This was a thin boy with bones. You know, she's holding him, begging people to check his pulse. He's covered with dust and rubble because of an explosion. And she's screaming, check his pulse, check his pulse. But the boy is cold and dead. But she's screaming, and that will... That image will never leave my mind, seeing that. Dr. Sahab, we cannot even imagine कि वहाँ क्या हो रहा होगा, although we see it, लेकिन दुनिया जिस तरह distract हो जाती है, अपने कामों में लग जाती है, वही हो रहा है, but they are the ones who are living that hell. आप जब आपके 2 विजिट्स जो रहे हैं, हमें ये पता है, यहाँ बैठे हुए हम रिपोर्ट भी करते हैं कि देयर इज़ नो हॉस्पिटल दैट इज़ रियली इंटैक्ट. फील्ड हॉस्पिटल्स उन्होंने किए हुए हैं, लेकिन वो टारगेट ही रहते हैं. वेयर डू यू ऑपरेट व्हेन यू गो? मतलब आप जाते हैं, हाउ डज इट वर्क? यू आर अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स दैट यू गाइस गो देयर, फिर वहाँ वेयर डू यू प्रैक्टिस? Well, we go with the World Health Organization. I was actually on the first mission from North America, and even in general, that went in December when nobody was going. When I went in March, I went to the European hospital, which was the only fully functioning hospital that was left. So when I did my surgeries, I did them at the European hospital. But then in May, the Israeli army, occupation army, they evacuated the hospital. So right now, I mean, it just goes to show you how resilient the Palestinians, I mean, they're brilliant, wonderful people, strong faith, intelligent, and very innovative. I mean, hospitals are destroyed, but they have no choice. After the Israeli army is left, after they've destroyed everything, they come back and they somehow rebuild whatever they can for the hospital, because there's over 100 people dying almost every day. I mean, there's a child dying every 10 minutes right now, intentionally being targeted by Israel. और आपने दिसंबर में विजिट किया और उसके बाद मार्च में विजिट किया, मतलब सूरत हाल और ख़राब ही होती हुई या हुई भी नज़र आई आपको? Much worse. I mean, between December and March, it was like a 3-month. It was much worse. And now it's even more, much worse, but people have been distracted by other things, but the genocide is going on even more so. And the other thing is that they keep on asking the people to move from one place to the other, and that's by intention, because the Israeli army knows that when they're migrating from one place to the other, people will die. Why? Because people have amputations, they're starving, they're thirsty, they're sick, there's no wheelchairs, so even adults who are amputated are being held, and people will die on the way. And that's why, and people will remain in a chronic state of stress, right? So they'll be weakened, their immune system will weaken, and they'll die. And Israel knows this, and that's why they keep on moving them from one place to the other. And 500,000 people have to leave everything in bags, move to another place. Then they bomb that place. It is a genocide. दुनिया के सामने हो रहा है, ये नस्ल कुशी है जो हो रही है, मतलब literally Dr. Yasser, thank you नजर आ रहा है कि टारगेट यही है कि कोई जिंदा ना बचे वहाँ पे. I'm speechless. और ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया, वही वाली बात है, मतलब it's broadcast live, it's happening in front of the world. या तो हो ना कोई छुप के कोई चीज़ें हो गई हो, पता ही ना चला हो दुनिया को क्या हो रहा है. और जो दुनिया है, जो सुपर पावर्स हैं, वो देख रही हैं और वो अभी फैसले ही कर रही हैं कि मतलब कि किसका कसूर है, कहाँ से बात स्टार्ट हुई. नहीं, वो ये होने दे रहे हैं. Of course.